Loop. Yeah, please come again, Ashish. Condition statement and loop. Yeah, Loop, so we yeah. have learned conditional. So if we are good, we can proceed to the next topic. So let me open your project. Your project is, what is the name of your project? 21st. Great. Okay, 21st. Let me open this. I will do one thing. I will make a filter on batches. I will remove all the other batches. Only current batch, I will just put it here so that I will never be confused. So let me come here. So today we are going to learn a topic that is called array. Okay, we are going to learn a topic that is called array depth. I'm just giving the name of a demo so that you can understand. Okay? Let me do this once and click on finish. And so here I will show you first of all the problem statement, then I will come to the solution. So now tell me one thing: if you want to store four numeric elements, you have to create four numeric variables, right? Int a equal to, for example, 2, int b equal to something like that, the 5. Then we are creating int c equal to something like that, 1. Then we'll say int d equal to something like that. You can take the example of any. Is it okay? So here you will see how many things are created in the memory. You will see when this line we executed, what will happen? This will be stored in the memory and it will be a reference variable of yes or no. So in line number 7, two things will happen in the memory. One reference variable will be created and one object, right side object, will be created in the memory. Getting my point? Yes. So now the question is that if I have created four integer value we want to store. So in my current code, I have created 4 reference variable and 4 values. So how many memories in terms of count, how many memories are occupied? 8. Yes or no? How many memories are occupied? 4 for reference values and 4 for reference variable. Getting my point? Say yes or no. If you are not getting, I can repeat it again. Sir. You are getting this point, Ashish, Manjunath and Tanu. Whenever I am writing this line of code in the memory, two things will happen. One reference variable will create, and once one value will be created like 2. It means when the 4 line will be executed, 4 reference variable will be created and 4 values. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So is it possible that 4 values are created in the memory, but pointing those 4 values, I don't need to create multiple variable. With the help of one single reference variable, can I point it? And if I am able to point it, it is going to save the memory for the rest of the reference variable. Getting my point? Ashish, Manjunath, Tanu, you are getting this point? Yes, sir. Yes. No, Pradeep, I'm a little confused. Okay. So, okay, tell me one. One reference variable, one value. Okay. Second reference variable, another value. Third reference variable, another value. So, how many reference variable you have created? 1, 2, 3, 4. Yes or no? Yes. And 4 values are in the memory. So actually we are using A to point 2 value, B for pointing 5 value, C for pointing 1 value, and D for pointing 8 value. I am telling you that is it if I can achieve this thing, that I create only one reference variable like F. I'm creating only one reference variable, but with the help of F single reference variable, I can point all the values like 2 I can point, then I can point 5, then I can point 1, then I point 8. If it is possible, it will be good thing, yes or no? Just tell me this thing. Using one reference variable, if I can point multiple values, it is a good thing or not? Yes. Yes. Reason is that one variable is used to point one value. Second variable is used to point second value.
I'm using only one variable to point multiple values. So it is actually saving the memory in terms of reference variable. आपको BCD, whatever you have done in case of BCD, you don't need BCD. You need only one variable to point multiple values. Getting my point? Yes. So how it is possible? This is possible with the help of a concept that is called array. If you want to use single variable, reference variable to point multiple values, you have to write the code in this way: int, then square bracket, int square bracket, and right side you can do one thing. You have to write new, then you have to write int, and how many values you want to refer with the help of this variable. How many values you want to refer in the current scenario? 4. 4. So now here you can say, when you are writing int a, this is called integer variable. Here you can say if is not an integer variable, it is an integer array variable. What we call integer array variable. Variable. With the help of f, you can actually store or refer multiple values. Only the way is that I will show you. What happens? Internally, f use the concept of indexing. Let me show you with the help of some diagram. Because I told you, if you want to learn the things very quickly in Java, you can learn with the help of memory. This is my memory. Okay. Yes. So if you guys know, you know that your memory is internally divided into parts. You know that, this, yes or no? You guys know this thing or not? Okay, tell me one thing. Whenever you go to the market to buy a RAM or hard disk, can you buy a RAM for, or you can say, can you buy a RAM or a hard disk for 227 memory? Can you buy? No. Why? Because he will say you can buy a memory of 128, 256, 512, fixed range. Yes or no? Yes, sir. Now the question is that what is the work? What is the thing which is working behind the scene? Today I'm going to tell you. You have seen this thing, but maybe you have not focused on that part. Okay, so what happens? Actually, your whole memory is internally divided into the small parts. Getting my point? For example, you can see this is my whole memory, and every memory is divided into small parts. Like you can say every memory is divided into the, you can say, small parts, and every part is, you can say, of 1 byte, 1 byte. I'm taking the example. That is not the exact scenario. But the main thing is that your memory is divided into the parts. Getting my point? Yes. So now, first of all, see the scenario when this code will run, how it is going to work. What happens that when this code will run independently, right? Because this is one instruction, this is another. So when this code will run, what it will do, just see here, it will go to the memory and will store the value to anywhere, not any fixed location. It will store to anywhere. Getting my point? Yes. And will create a reference variable here and will point this a to this value. Is it okay? This thing is clear? Yes. When the control will come to the line number 8, it will store the value 5. Again, not any fixed location, anywhere where it will find, okay, I can store it here. So it will store it here and will create a reference variable B. Getting my point? Now in the same way, it will create a value for 1. So it can store anywhere. So I'm taking the example of first scenario. It will store here 1. Is it okay? Yes, sir. So when we store this 3, let me last take the example of the D, 8 and D. So take the example, it is storing the 8 here. 8 here. And it will store refer with the help of reference variable. This concept is clear? Simple, storing the value and pointing with the help of
reference variable. So anywhere, anytime, wherever you want to fetch the value, you will point A and it will fetch the value from the A location. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes. Okay. Now what happens that because these memories are distributed, one is available this place, one is available another place, one is another available, one is another place. So you need different reference variable to point the values. In case of array, what happens? Let me show you that interesting thing. In case of a, let me do one thing. Let me replace this thing here, and same scenario I will show you. Same scenario I will show you in case of array, and you will be surprised that this is the benefit of that. Let me move it here. Now is in case of array, what happens? This is the memory. Getting my point? Let me divide it again. Two parts. Again, one. Again, two. So now in case of array, what happens? I told you, with the help of reference variable when, you can point multiple values. So when this line will run, what will happen? Just see. This line says that right side allocate a memory for 4 integer values. Getting my point? Allocate the memory for 4 integer values. So in this case, in the starting, it will actually, with the help of red color, I'm telling you, it will see that how many blocks it need to store the 4 values. 4. So at one place, it will not this one. At one place, it will actually allocate the memory in this way, something like this. 4 blocks occupied in one go, yes or no? Yes. And this whole block is referenced by a one reference variable that is called F. Getting my point? Just see clearly. In the case of previous, you have allocated different blocks at different places for storing the value. But in case of array, when you declare this thing, means you are saying that I need space for storing 4 numeric values and point the whole block with the reference variable F. So this whole block red will be referred by a reference variable F, the whole block. Getting my point? Say yes or no. Yes, sir. And internally, this whole block is referenced by the F, but internally, this is also maintained by the help of indexing like 0, 1. Let me write it outside. It just gives that the whole block is referenced by F, but internally it is divided into the 4 parts. 0, 1, 2, and 3. Are you getting my point? Are you getting my point? It is something like that. You have a big house, but internally big house is divided into the rooms. Getting my point? Yes, sir. So here you will see the benefit is that the F will point to the whole block, and internally block is because you have given the 4 elements. So internally block will be divided. Internally it will be divided into the 4 parts: 0 part, 1 part, 2 part, and 3 part. So now how you are going to refer, if you want to store some value in the 0 part, 1 part, 2 part, or 3 part, what you are going to do? Just see here. This first part is known as F0. How it is known? F0. Getting my point? Second part is known as F1. Third part is known as F2. And fourth part is known as F3. Getting my point? Yes, sir. So actually this concept 0, 1, 2, 3 is known as indexing. In array, you can use single reference variable to store multiple values, and internally it makes the indexing concept. Means I'm storing the 4 values. Just see how. F0.
In the first part, it will store 2. F1, it will store in the second part 5. F3, oh sorry, F2, it will store the value 1. And F3, it will store the value 8. Now tell me one thing. How many reference variable you have created here? 4. How many values are storing? 4. 4. But tell me how many reference variable you have created here? 1. And how many values you are pointing? 4. 4. Okay, don't think it that these are 4 reference variable. Reference variable is only 1, but with the help of reference variable plus indexing concept, you can point multiple values. In short, you can say here 4 values are stored and 4 reference variable are there. But here 4 values are still there, but reference variable is only 1. 1. So to save the memory of the reference variable, you use the concept of array. This is one benefit. Getting my point? What is the first benefit? Using one reference variable, you can create or refer multiple values. This is clear? Tell me yes or no. Yes, sir. Second thing, tell me one thing. It is a very, very real life concept. Tell me one thing. If you can take the example just like a students. Suppose memory is just like a whole class. In class, students are distributed. 2 is 1, 8 is another place, 5 is another place, 1 is another place. Tell me one thing. If you will try to access these students, if you want to gather these students, you want to make any calculation on these students, any operation on this student, it will be little bit slow. Yes or no? Because you will give some instruction to the memory, this part. You have to search this memory, then you have to search this memory, then you have to search this memory, and then you have to search, because every memory is distributed. It is something like that. In your class, every student is distributed. Some person are sitting in the front, some person are sitting in the back, some persons are sitting in the left and right, something like that. So everybody is distributed. Getting my point? Yes. So, So tell me one thing. If I want to make a sum of all these numbers, what will be the process in the memory? First of all, you have to fetch the value of 2 from this memory. Then you will go to the another memory 8, fetch the value 8. Then you will go to the another memory. Then you will go to the another memory. So it means to fetching the memory, to fetching the value, you are accessing different memory locations. Yes or no? Yes or no? Say no. At least you can say no. If you are saying no, then I have to proceed. Priyanka, you are getting this point? no, sir. So at least say no. How many times I can say no, 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 no? You should say. If I will be irritated, you can say, Pradeep. When I say no, you will become irritated. If I say, then you have a right to say, I am not going to speak, Pradeep. Reason is that you irritated. If you are not getting any single person, you can ask me. Okay, tell me one thing. Again, you can consider something like that. If one, you can say when I'm storing the value in the multiple location. Okay, you can take the example. This is just like a room. In the room, I'm just playing a game of hiding the elements, hiding the objects. You have played this game in your company. In companies, in some festival, they play a game. I will hide something in the room and you have to find it. Getting my point? You have played this game? Yes. Now tell me one thing. In the room, I am hiding one object at this place and another element I am hiding it another place. Another element, another place means I have a 5 object I have here there and I am hiding these 5 elements in different locations of your office. Getting my point? Now tell me how much time you will get to find all the elements. How many time? It will take time or not? Yes. Yes, sir.
Because reason is that if you find the first element, you don't know where is the second element. Yes or no? Yes, sir. If you find the second element, you don't know where the person has hide the third element. But what in case of array? If you got the first element, that is because every element is stored at one place. Yes or no? One Yes. place means the whole block is saying that you are storing 4 elements, but 4 elements stored in a sequence. Yes or no? If you got the F0, definitely F1 will be the consecutive. F2 will be the same order. F3 will be the same order. All will in the same sequence. Yes or no? Yes, sir. Now we are getting the example. It is something like that. You have actually placed the object in different location in your room. So it is very tough to calculate, tough to find it. Once you find one, to find other, you have to make some time. You have to invest the time. Where is the second element? Where is the third element? But in case of array, every element is in the same sequence. Getting my point? Yes or no? Yes, sir. So your calculation will be fast. If I will say, can you give me the sum of all the numbers in the array? Your calculation will be fast. It will find the first element here. Just see here. 2 will be here. Then where will be the 5? In the next location. Next. 8 will be in the next location. No, not that. It was not 8. It was 1. I'm 1. taking the example of same. And 8 is here. Now tell me, it is easy to find the sum of these numbers in the array, or it is little bit time taking to get the sum in normal variables? Tell me, which is more fast? Where you will get the calculation fast? If the locations are distributed or if the locations are in the same sequence? Which will be fast? Array. Same sequence. Same sequence. This is the second benefit of the array, because every element is stored in the same sequence, and that is the another benefit. Because every element is in the same sequence, that's why you don't need different reference variable. Using single reference variable f, you can, if you want to get the first element, you use the reference variable plus internal division. Internal division is known as indexing. I can again give the example. In your company, you have 100 rooms. Okay, in your company you have 100 rooms. You give different name for that. Room number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and all the rooms you if you put on same sequence, you can access every room easily. Yes or no? I'm Yes. giving the example of your meeting room. If your all meeting rooms are on the same floor and in the same sequence, you are easy to access them, or your meetings rooms are available in different floors and in different location, that will be more easy to access. Which one will more easy to access? Same floor. Same floor, same sequence. Yes or no? Yes, sir. Yes. So only the benefit of array is that you can store the values in array also, you can store the value in reference variable also, single. But the benefit of array is that you can use one reference variable and the values will be stored in the same sequence. If you are going to perform some operation will be fast. What is the meaning of that? In case of normal numbers, if I write int sum, I'm creating a reference variable. I'm writing a plus b plus c plus d. Here the sum calculation will be little bit slow in comparison to here when I am making a calculation total equal to f0 plus f1. Plus f2 plus f3. Now getting my point, yes or no? Both will do the calculation, but here the calculation will be fast, because every number is available just after the first number, but here numbers are available in different locations. Getting my point? Yes, sir. So this is the benefit of array. Array is always fast, but one array should be used when you are using multiple values.
Getting my point? Array is not used for single value. This point is clear or not? Clear. Now, but at the same time, there is some drawback of the array. Now the question is drawback of the array. What is the drawback? Suppose take the example. Here I've taken the example to store the 4 numeric values. But take the example, I want to store different type of data. I want to store a numeric value A. Let me do one thing. Let me change it. Suppose I want to store a numeric value, for example, int x. One value I want to store numeric. Second value I want to store float. Getting my point? 4.5. Third value I want to store, that is to long. Like 6700. Third value I want to store alphanumeric. So with the help of 4 reference variable, how many values I'm storing here now? Tell me how many. Using this 4 reference variable, how many values I'm storing? 4 value. 4 values. Only the thing is that here the data type of value is different. In one it is numeric, one is decimal, one is long, and one is string. Yes or no? Yes, sir. Yes. If we want to create an array where I can store values of different type, I can't create. I can't create. It is not something like that. I can create a reference variable where it can point 4 values, and 4 values are of different type. Getting my point? Yes or no? Yes. Your array can be only of one type. If you have declared in this way int, it will be an array of integer. If you will try to change the data type like string str, and you will make an array square bracket equal to new string, and you will write suppose 4. So it can store 4 values, but all the values will be string. Getting my point? Yes or no? Yes. Yes, sir. So it means array is beneficial when you want to store, first point, multiple values and all of the same type. If they are different, you can't use the concept of array. Second thing is that you will see. Second thing you will see here in the array, suppose you have given the size of 4 and you are storing the value only 2. So your 2 memory will be waste. Getting my point? Yes, sir. You can easily understand. I have given the memory, I have allocated a block of 4, but you are using only 2 blocks. 2 will be waste. Yes or no? Yes. It is something like that. You have a house. You have asked someone to create a house for you with 4 rooms. And at runtime, you are only using 2 rooms, and 2 rooms are just as it is. So you are wasting the memory of 2 rooms in your house. Yes or no? Yes, sir. So array, you should use array keeping these things in mind. Array you can use, you can actually save the memory in terms of reference variable. But whenever you are creating an array, you have to give the size and you have to utilize all the size. If you are giving the size and not utilizing, again, you have saved memory in terms of reference variable, but you have lost the memory in terms of actual value. Getting this point? Yes or no? Yes. Your voice is saying that there is no confidence. What is the Yes, point? Pradeep. Getting point? Yeah. So only when you should use the array when you have to store multiple values of the same type using single reference variable, you should use the array. Getting my point? Now, Yes. the thing is that in the interview, they can ask you a question. They can ask you a question. Can you write a program to give the sum of all the
numbers in the array. Getting my point? Yes, sir. What program I'm saying that? You have to write a program to sum or give the total of all the numbers in the array. So anybody can tell me how I can write the program. If you focus on that, can we use a loop for that? Yes. How we can use a loop for that? You know that in the array, this is very common thing. Indexing is fixed 0, 1, 2, 3. So how we can do it? Tell me. I'm creating a loop. Just see For with me. int. Yes, for int. And then we write int I equal to 0. I equals to 0. Very good. I will make indexing. And how many elements I have to store? 4. 4. 4. So it means loop should run, I should run less than 4. Less than Why I'm 4. saying less than 4? Because 4 You start elements from are 0. there. 4 elements are there, but index start from 0 to 3. or index will always less than 1. So you are saying I equal to 0, start with I equal to 0 and take your condition I less than 4 and I plus plus. Getting my point? Yes. Yes, sir. And then you have declared this total variable above it. Just do one thing. Declare it here. Total equal to, by default, assume that total is 0. So in the loop, you will write total equal to total plus F. Fi. Very good. So who is not getting this logic, what I'm trying to do? In the loop, what will happen? By default, the total means sum is 0. When the control will go to the loop, what will be the value of Fi means F0? It is 0. What is the value of F0? 2. 2 will be added in the total and it will become 2. And this value is again assigned to the total. So now the final value of total become 2. 2. Now the loop will go to the next iteration, I plus plus. This time Fi means what is the value of F1? 5. 5. And what was the last updated value of total? 2. 2. 2 plus 5 becomes 7 and 7 is stored in the total. Yes or no? Yes. So in this way you can say your calculation is very, very fast. TOTAL. Let's print the total. Let's print the total and see. What answer you are getting? 60. 16. And you can say with the help of array, actually your calculation is also fast. Now here you can see. Total equal to total plus Fi क्यों कर रहे हैं? हम टोटल प्लस टोटल Fi इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपने लास्ट में इन सबका सम एक वेरिएबल में इकट्ठा करना है. You have to actually store the total of all the sums. तो आप कैसे करोगे? जो भी आप 2 में 5 ऐड किया इसको एक जगह स्टोर करोगे, 7 को 7 में फिर 1 को ऐड करोगे, फिर 7 के बाद 8 में फिर 8 को ऐड करोगे, तो वो नंबर कहीं ना कहीं स्टोर करते जाओगे ना. You have to store. So total is a place every time whatever you are adding in the total, you are again assigning it to the total. जो भी आपको टोटल का जो सम मिला है आप दोबारा उसको किसमें डाल दे रहे हो? टोटल में. Total. तो अगली बार जब टोटल आ रहा है तो टोटल वो बन रहा है जो पिछले 2 नंबर का क्या है? सम. समझ गए? Yes, sir. तो इन दिस वे यू आर मेक. और अगर इफ यू वांट टू राइट द सेम लॉजिक इन केस ऑफ दिस इट इज लिटिल बिट टफ, क्योंकि उसमें तो एक ही तरीका है करने का. यही कह रहा हूं. इसमें तो लूप लगा ही नहीं सकते. नहीं लगा सकते ना. Yes, sir. अब now I will tell you the benefit of array. In case of array, if the size of the array was suppose 5, but still you will see 5 means you are storing the values 5 here. One more index F4. And here you are storing 9, but you will see still the logic of loop will be same. Reason is that only the thing is that instead of 4 it will become 5. Yes or no? Yes. But you can write a common logic because in the array there is a keyword. Just see here, what is the reference variable of array? F. And F contains a keyword that is called length. So now the benefit is that
in the array. You don't need to care about that, whether you are storing 5 or 6 or 10 elements. This code will be generic. Yes or no? Yes. You got the benefit of array. You are storing same type of values, but your operation will be vary. Now you can see, add one more array element, 6, and add one more element here, 5, and add here again 5. Do you think I have to make any changes in this concept? No. No. It is generic, and this thing you can write only in case of array. Here you cannot write, because every time you are going to add, you have to modify the coding to add new variable like b plus e. Yes or no? Yes. So this is the benefit. So whenever you run it, you will find the benefit of array. In the interview, they can ask you questions like, what is the use of array? What is the limitation of the array? And last, they will ask, can you write a code to give me the sum of all the elements? Getting my point? Yes, sir. सर ये समझ नहीं आया सर। क्या नहीं समझ आया? बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया? जो अपन साइज 5 कर रहे हैं 6 कर रहे हैं उसके बाद जो ये लूप वही सेम जा रहा है। हाँ, लूप इसलिए सेम जा रहा है बिकॉज द थिंग इज दैट व्हेनेवर लूप की कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हाटएवर इज द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द एरे, है ना? जो आपकी एरे का जो साइज है, हमेशा लूप कहां तक चलना चाहिए? उससे एक कम। ओके। तो जब आप f डॉट लेंथ देते हो तो ये रन टाइम पे खुद ही निकाल लेता है उसका लेंथ कितनी है। अगर यहाँ पे आपने लेंथ दिया 6, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 6। अपने हाथ द लूप विल रन फ्रॉम 0 to 5। तो अगर मैं यहाँ पे कितने भी एलिमेंट बढ़ाऊं, अगर मैंने एलिमेंट का साइज बढ़ाया, तो यहाँ पे लेंथ भी अपने हाथ रन टाइम पे क्या निकलेगी? एक्चुअल लेंथ। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो f डॉट लेंथ है, आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है तो इसको ऐसे कोडिंग आसान कर लो, आप ऐसे लिख दो एरे लेंथ। एक एरे लेंथ का वेरिएबल बनाओ और उसमें लिख दो f डॉट लेंथ। जब आप f डॉट लेंथ करते हो, f डॉट लेंथ मींस रिटर्न द लेंथ ऑफ array, and this array length you can use in your I less than b. So I have tried to split the code. Now you are getting this point, Tanu? Yes sir. With the help of this function, this keyword, you can get the actual length of the array. If it is 6, you will get 6. If it is 7, you will get 7. Whatever you have get, you have make a condition I less than that one. Getting my point? So in this way, you can make a sum of these numbers. Okay. So now the thing is that it is something like a programming. So if you want to get some good understanding, try to practice your own and put the concern in the words. This is clear? Anybody else? Ashish, Manjunath, Priyanka, you are getting? Yes, sir. Clear. yes. Yes. Again, I am saying that if you are not clear, don't think about me. Don't put mercy on me. Don't make mercy on me. मुझ पे दया मत करो. मैं 100 बार पढ़ाऊंगा. ठीक है, फीस मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ. जो फीस आप दे रहे हो वही है, लेकिन आपसे डेडिकेशन मांग रहा हूँ. अगर आप मैं बताने में नहीं थक रहा हूँ तो आपको पूछने में नहीं थकना है. मंजुनाथ, you have attended my previous sessions also. मैं कभी फ्रस्ट्रेट होता हूँ मंजुनाथ? No, Pradeep. Never. नेवर फ्रस्ट्रेटेड. लेकिन द थिंग इज दैट अगर आप पूछने में फ्रस्ट्रेट हो गए तो इट्स योर लॉस, इट्स योर फॉल्ट. तो whenever you have a doubt, tell me. I will try to tell you 10 times. It's my job. It's I am invest my time. आपको सिर्फ डेडिकेशन देना. ठीक है. That's why my sessions are very very different from others, because I don't try to complete the course. I try to complete the concept. जितना भी पढ़ो उतना अच्छे से आ गया, ये जावा में. ठीक है. So again I'm asking Ashish, Manjunath, Priyanka and Tanu, we are good to go or you want to ask it again? Okay. We are good, Pradeep. Okay. So I will come to that, or I will do one thing. Whenever I will try to pick any this type of topic, I will not go to so much topics in my session. So one topic is there. Now I will cover one more small topic. And this topic is a string class. Now you have seen that string class demo.
You have seen that you can create your own class. You can create your own class and functions. Yes or no? You can create your own class. We have learned this. How many type of functions are there? Input, output. We have learned this thing. Yes or no? Yes. Yes. So today you have seen that before that you have a student class, you have a properties, you have a function, and how you can assign the property, how you can read the value, how you can call the function. Today I'm going to tell you that there is inbuilt class in Java. There is inbuilt class in Java, and the name of that class is string. Java में पहले से ही मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, so that okay, don't worry if you are not getting something in the Hindi, you can assume it that I'm repeating everything. Okay, it is not something like that I'm saying only the things in Hindi or English. I'm using both the languages and repeat everything in English as well as Hindi. Is it okay? Yes. Yes. ठीक है. So don't think कोई ये मत सोचना, because what I was doing, I was taking a session और वहां पे क्या था, 2 persons are from the south. तो उन्होंने बोला सर आप जो हिंदी में बोलते हो समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में जो बोल रहे हो समझ में आ रहा. मैंने बोला जो भी मैं इंग्लिश में बोलता हूँ उसको मैं हिंदी में रिपीट करता हूँ, अगर किसी को दोनों आती है तो वो आप पकड़ लोगे. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. सो नाउ विल कम टू हियर. हम अपनी स्ट्रिंग क्लास को, देयर इज अ इनबिल्ट क्लास इन जावा दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट that how many functions are there and how we can call it and how we can utilize in our programming. जावा में हमारे पास एक क्लास पहले से बनी है, स्टूडेंट तो हमने बनाई. जावा में एक क्लास पहले से बनी है, उसके अंदर कई फंक्शंस हैं, हमें वो प्रोग्रामिंग में बहुत इस्तेमाल होंगे, तो हम देखेंगे हम उनको कैसे यूज करें, कैसे इस्तेमाल करें. दैट इज क्लियर? तो स्ट्रिंग क्लास का, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, हाउ यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास. किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? मंजूनाथ बताएंगे. मंजूनाथ, अगर मुझे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो क्या कोडिंग लिखते हैं? क्लास का नाम, yes or no? Yes, correct. Then after give the reference variable, I can say str, something like that. Then I write new, and then I write Yes, again the name of the class. Yes or no? Yeah. Yes. In this way, create the object. Yes or no? Yes. And I have already told you one more thing, that your constructor can be overloaded. Sorry. Yes or no? Getting my point? हमने बताया ना कंस्ट्रक्टर, आपको फंक्शन में कंस्ट्रक्टर बताया था कि नहीं बताया था? Yeah. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मैंने बोला सम टाइम इन योर क्लासेस यू हैव ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो स्ट्रिंग क्लास में, इन केस ऑफ स्ट्रिंग क्लास, इफ यू वांट टू स्टोर सम वैल्यू इन द स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग बनाई, साथ में वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो उसके कंस्ट्रक्टर में ही वो वैल्यू लिख दो. सपोज टेक द एग्जांपल प्रदीप. तो ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके str वैल्यू में क्या पॉइंट कर देगा? प्रदीप को. अगर मैं देखो मैं प्रिंट करूं, इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ str1, इट विल प्रिंट द वैल्यू प्रदीप. गेटिंग माय पॉइंट? करा कि नहीं करा? Yes, sir. Yes. तो दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. लेकिन चूंकि स्ट्रिंग क्लास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो आपको एक शॉर्टकट दिया गया है. क्या शॉर्टकट दिया गया है? कि आप इसी चीज को ऐसे लिखने की जगह आप ऐसे लिखते हो. और आपने देखा है, यू हैव लर्न दिस थिंग दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड इन दिस वे, यू कैन सिंपली राइट str इक्वल टू डायरेक्टली प्रदीप. यू हैव सीन इन योर प्रॉपर्टीज. यस और नो? आपने देखा होगा स्टूडेंट क्लास में, मैंने जब भी कोई ऐसा वेरिएबल बनाया होगा, इसके आगे क्या लिखा है? तो जो आपकी प्रॉपर्टीज थी वो भी अपने आप में क्या है? एक क्लास है. और इस क्लास के अंदर जब भी कोई वैल्यू मैं सेट करता हूं तो देखो डायरेक्ट सेट करता हूं. तो यहाँ पे देखो, जस्ट सी हियर, इफ आई एम राइटिंग इन दिस वे str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और वी आर राइटिंग str इक्वल टू प्रदीप, बोथ आर सेम. दिस लेट मी राइट इट. अगर मैं str2 लिखता हूं तो देखो क्या प्रिंट होगा, तो भी क्या प्रिंट होगा? सो दिस इज द easiest way to create a string object. Clear है? Yes. तो ऑब्जेक्ट आप बनाते, जनरल स्टैंडर्ड ये, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हो. देखो स्टूडेंट का भी ऐसे ही बनाते हो, student, स्टूडेंट, stu इक्वल टू New student. लेकिन जावा में एक क्लास पहले से बनी है, तो उसने आपको एक फैसिलिटी क्या दी है कि आप इसकी जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हो. मेरी बात समझ गए?
हाँ जी। Yes. Yes. तो ये आपको जितनी भी जावा ने आपको क्लासेस दी हैं उस क्लास में जहां जहां उसका इस्तेमाल डेटा टाइप की तरह होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, उनके साथ ये फैसिलिटी दी गई है। इन जावा there are the classes which is actually used to store the data, like string class, like float class, like long class. These classes are treated in a special manner that you can create the object of these classes in some way. इसमें भी यही करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट ही बनाएगा, इसकी जगह वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएगा और str को उससे क्या कर देगा, टू से पॉइंट कर देगा। क्लियर है? Yes. तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि प्रदीप ने बोला स्ट्रिंग एक क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका तो बड़ा अलग है। तो दिस इज गिवन बाय द जावा। क्लियर है? Yes. ग्रेट। अब आप मुझे ये बताओ, स्ट्रिंग जो एक्चुअली होती है, स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक अ डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख देते हो, स्ट्रिंग को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। स्ट्रिंग इज नोन एज अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अच्छा आप मुझे बताओ कि स्ट्रिंग का मतलब एक तरह से क्या बोलूं, इसके अंदर वर्ड ही तो होता है, कोई वर्ड या सेंटेंस लिख सकता हूं ना। प्रदीप लिख दो, या लिख दो प्रदीप इज अ गुड बॉय, तो नहीं लिख सकते, मैन लिख सकते। प्रदीप इज अ गुड मैन। नाउ यू कैन टेल मी Pradeep is a good man. So I have written, I can write a word under string. I can write a sentence under string. So can anybody tell me what you will define? What is word? Word क्या होता है? अगर कोई word मैं बोलूं, string छोड़ दो. If you talk about Collection of word, character. very good. It is a, again repeat it. Collection of character. Very good. This is a very, very good definition. Actually, word is nothing. It is a collection of alphabets or characters. But here I want to add one more thing. In a sequence. Getting my point? Yes. Yes. Why I'm saying the sequence, you will be surprised. I am using three words. T-E-A. What word you have created? How many characters you have used? T-E-N-A. Yes or no? Yes. Three. I have used three characters. So it is preparing a word. टी मतलब चाय। सही कह रहा हूं? Yes. अब why I have said that कि आशीष ने बोला कि it is a collection of alphabets या character, तो मैंने क्यों बोला सीक्वेंस बोलो, कि देखो अगर मैं सीक्वेंस को भी कंसीडर करता तो यही वर्ड क्या बन जाता, क्या बन जाता? Eat. अब देखो क्या दोनों में, आशीष मुझे बताओ, दोनों में सेम अल्फाबेट है कि नहीं है? Yes, sir. दोनों कलेक्शन, लेकिन डेफिनेशन में सीक्वेंस क्यों लगाया? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस यू कैन टेल दैट इट इज मीनिंग इज चेंज्ड। यस और नो? Yes. तो अगर वर्ड की डेफिनेशन आप ये बताओ, आप अपने बच्चों को भी बताना, ये ज्यादा परफेक्ट डेफिनेशन है। वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इन ए सीक्वेंस। उसमें सीक्वेंस भी मैटर करता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन जो मैंने बताई, उसका क्यों बताया कि इंटरनली आल्सो जावा मेंटेन ए सीक्वेंस। जावा के अंदर भी डिफरेंस, जावा में जब व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस कोड str1 इक्वल टू tea, ये टी लिखा है, लेकिन इंटरनली इसे टी कैसे स्टोर करता है उसे नहीं पता। टी नाम का कोई वर्ड होता है, उसे तो ये पहले पता है कि पहले प्लेस पे आपने टी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर ए लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने EAT लिखा होता तो क्या करता, पहले प्लेस पे ई को रखता, फिर ए को रखता, फिर टी को रखता। यस और नो? हाँ जी, यस और नो मुझे बताइए तो। Yes. तो देखो अंदर वो मेंटेन कैसे करता है। आप जब भी कोई वर्ड या कुछ लिखते हो, इन केस ऑफ स्ट्रिंग इंटरनली इट मेंटेन्स द इंडेक्सिंग जस्ट लाइक द एरे। जो भी पहला कैरेक्टर आप दोगे उसे स्टोर करता है कहां पे? जीरो पे। उसको क्या इंडेक्सिंग देता है? जीरो। Zero. जो भी अगला कैरेक्टर आप स्टोर करते हो उसे इंडेक्स देता है 1, और ऐसे ही आप स्टोर करते जाते हो, वो से क्या देता जाता है? इंडेक्सिंग। अगर आपने TEA की जगह, अगर आपने TEA की जगह EAT लिखा होता तो कैरेक्टर तो वही होते, लेकिन ई स्टोर होता Zero. वेरी गुड, यू गाइज आर ऑसम। ए स्टोर होता 1. यू गाइज आर ऑसम।
तो आप खुद देखो कि स्ट्रिंग अंदर से क्या करती है। इंटरनली वो जब भी कोई आप वर्ड देते हो तो आपको लगता है आपने पूरा कर लिया। अब जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हो ना TEAEAT, तो आप कीबोर्ड पे अलग अलग की टाइप करते हो कि नहीं करते हो? यस अभी तो वर्ड बनता है। तो इंटरनली स्ट्रिंग कैसे बनती है? जो आप टाइप करते हो इंटरनली वो उसकी क्या बना देती है? इंडेक्स। क्लियर हो गया? तो आप स्ट्रिंग की डेफिनेशन भी ये देना, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स इन अ सीक्वेंस। और ये भी बोल सकते हो एक ही लाइन में, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आप उस लाइन को दो वर्ड को अलग अलग मत बोलो कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इन ए सीक्वेंस। आप एक लाइन में बोल सकते हो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब आपको मैंने ऐसा क्यों बताया कि जावा में स्ट्रिंग क्लास के अंदर बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं। इन द जावा स्ट्रिंग क्लास you have to make so many manipulation which can be used in your automation. So that's why string class contains so many functions. string class के अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन जो इसी पे बेस है क्या? str। ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है ना, str1। यस सर तो देखना इसका str1 किया, डॉट किया, एक फंक्शन की बिल्कुल यू विल सी अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन। दिख रहा है बहुत सारे फंक्शन। यस ये फंक्शन आपके बहुत काम आते हैं। अब सबसे पहला चीज देखना, पहला फंक्शन क्या दिख रहा है? कैर एट। कोई मुझे बताएगा? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड विद द फंक्शन नेम कैर एट? कैर एट फंक्शन में कोई पैरामीटर पास हो रहा है? इंडेक्स वेरी गुड। इसका रिटर्न टाइप क्या है? कैरेक्टर वेरी गुड। ये फंक्शन किस क्लास का फंक्शन है? स्ट्रिंग तो मैंने ये आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जब भी आप डॉट करोगे, तो जब भी whenever in Eclipse you will make a dot, it will show you the syntax of the function. So whatever, first of all, if it is function, you will see the round bracket. It means it is a function. Whatever is written within the bracket, that is called parameter. After colon, whatever you are able to see, that is called return type, char. And whatever is written after the dash, that is called name of the class. तो आप यहाँ पे देखो कितनी आसानी से समझ गए। अगर मैं इसे करता हूं तो इंडेक्स का मतलब, अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में ये पता करना है, इन योर स्ट्रिंग इफ यू वांट टू फाइंड दैट व्हाट कैरेक्टर इज अवेलेबल एट पर्टिकुलर इंडेक्स, तो आप इस फंक्शन को कॉल करो और इसमें पास कर दो इंडेक्स। अगर मैं पास करता हूं इसमें 0, क्या मिलेगा मुझे? एक कैरेक्टर मिलेगा 0 पोजीशन का। यस और नो? ये क्या देगा मुझे? 0 पॉइंट पे जो भी कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग में है str1 में, वो मुझे रिटर्न कर देगा। इसका रिटर्न टाइप था कैर। तो कैर नाम का एक डेटा टाइप बना के एक वेरिएबल बना दो। सपोज वेरिएबल का नाम रख दो माई कैर। ये क्या करेगा फंक्शन मुझे बताओ? अगर मैं कैर माई कैर को प्रिंट करूं तो क्या मिलेगा मुझे? टी। वेरी गुड, यही तो पूछना था। ये देखो, इंटरव्यू में आपको ऐसे ऐसे लॉजिक लिखने होंगे जिसमें आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ मेरी स्ट्रिंग के अंदर टी नाम का कोई अल्फाबेट यूज हुआ है कि नहीं हुआ। समझ गए? वो पूछेगा आप बताओ, ही कैन आस्क यू, कैन यू टेल मी इज देयर एनी अल्फाबेट टी यूज्ड इन माय स्ट्रिंग? इज देयर एनी अल्फाबेट ए इज यूज्ड इन माय स्ट्रिंग? इज देयर एनी अल्फाबेट यूज्ड एम इन माय स्ट्रिंग? तो देखो यहाँ पे वो सब कैलकुलेशन करने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए, फॉर मैनिपुलेटिंग दोज लॉजिक्स यू नीड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ। क्लियर हो गया? हम स्ट्रिंग क्लास को क्यों सीख रहे हैं, उसके फंक्शन को। तो पहला फंक्शन आपने समझ लिया क्या, कि जब भी आपको किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी इंडेक्स पे पता करना है कि कौन सी वैल्यू है, तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। समझ गए? यस सर। अब यहाँ पे देखो, आपको खुद ही बताता हूँ। यू हैव लर्न द लूप कॉन्सेप्ट, यू हैव लर्न द स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। मुझे पता ये करना है कि मेरी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, मुझे वो सारे लूप में, वो सारे मुझे प्रिंट करके दिखा दो। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 10 लाख हो। मुझे बताओ क्या लगाओगे आप लॉजिक? क्या आपको प्रोग्रामिंग यही तो सीखनी है
जो कोड मैंने एक के लिए किया है वो कोड मैं लूप में कर दूंगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? Yes. तो यहाँ पे आप मुझे बताओ आपकी कौन सी चीज है जो डायनेमिक है? केवल ये जीरो की जगह Index. क्या होना चाहिए? वेरी गुड। अगर मैं इसे आई कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं इसे आई, तो यहाँ पे मैं आई से बना सकता था। आपको एक एक स्पून फीडिंग की तरह बता रहा हूं मैं, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे आई लेस देन करना है। वहां पे एरे में क्या यूज करते थे? लेंथ। क्या यूज करते थे? लेंथ। यहाँ पे str1 में भी लेंथ निकलती है, लेकिन फंक्शन का नाम लेंथ ना होके होता है, देखो ध्यान से क्या होता है, लेंथ होता है कि क्या होता है? देखो तो पहले, हो सकता है लेंथ ही हो। क्या होता है? Length. लेकिन दोनों में डिफरेंस देखना, यहाँ पे लेंथ के आगे लगा है ब्रैकेट, तो यहाँ पे लेंथ क्या होता है? फंक्शन। Function. और अगर एरे में ध्यान से देखो तो क्या लेंथ के आगे कोई फंक्शन का सिंबल लगा था? नो सर। तो यहाँ पे एरे में लेंथ होता है कीवर्ड। लेंथ में क्या होता है? कीवर्ड। लेकिन स्ट्रिंग में लेंथ नाम से क्या होता है? फंक्शन। ध्यान रखना। और लास्ट में आपको पता है क्या करना? आई प्लस प्लस करना है। Yes. और ये जो प्रिंटिंग का काम है इसी को उसके अंदर कर दो। अब आप मुझे बताओ, क्या प्रोग्रामिंग सीखना टफ है अगर एक एक स्टेप से जाओ? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ जी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes. ठीक है। अब देखो, आपको मैं एक प्रोग्रामिंग का लॉजिक बता रहा हूँ, इतना डिटेल में बताता नहीं हूँ, बट आई वांट टू मेक योर बेस। मुझे कैरेक्टर प्रिंट करने हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ये प्रोग्रामिंग है। आप मुझे बताओ कैसे करोगे? थोड़ा दिमाग लगा। मुझे कैरेक्टर प्रिंट करने हैं TEA नहीं, रिवर्स ऑर्डर में EAET। आप इस प्रोग्रामिंग में क्या, इस लूप में एक थोड़ा सा चेंज करना है और आपका ये काम हो जाएगा। कैसे करेंगे? कोई दिमाग लगाओ। So last wala I right. So there, if I used in for loop minus like decrement. वेरी गुड। देखो, पहला तो डिक्रीमेंट करना है, ये तो सबको पता लग गया, डिक्रीमेंट करना है। ठीक है। अब आता है डिक्रीमेंट करना है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करनी है? 2 से सर। कहां से? 2 से। One no, it's हाँ, one. आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो स्टार्ट करनी है 0 2 से, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 है ना? Correct. Yes. हाँ. लेकिन अगर मैं 2 से करूंगा तो एक काम करो, हार्ड कोडेड हो जाएगा। अगर यही T की जगह लिखा होता प्रदीप तो 2 थोड़ा रह गया। यस तो इसका मतलब जो जो 0 है, व्हाट शुड बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ 0? एक्चुअली ध्यान से देखो तो क्या यही नहीं होनी String or चाहिए? length? वेरी गुड। ऐसे प्रोग्रामिंग सीखी जाती है, यानी आई की एक्चुअल वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? जो आपकी, String or length. लेकिन लेंथ से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। लेंथ Minus तो one. क्या होगी? लेंथ -1। One. Yeah. सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? Correct. ऐसे ही तो प्रोग्रामिंग सीखते हैं। नाउ द कंडीशन विल आल्सो बी चेंज। आई लेस देन 0 की जगह आई शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। 10 0. Yeah. इक्वल टू 0 भी होगा, क्यों? इंडेक्सिंग तो 0 भी होती है। हाँ. Correct. तो ऐसे प्रोग्रामिंग होती है। अब जरा एक काम करो, प्रोग्राम को रन करो और देखो प्रदीप कैसे प्रिंट हो रहा है। कैसे प्रिंट हो रहा है प्रदीप? Reverse order. आप चाहो तो छोटा भी देख लो, मुझे पता है कुछ लोग छोटा देखने लगे कि बड़ा वर्ड लिख दिया, प्रदीप का पकड़ ही नहीं पा रहे। टी को ही प्रिंट करते हैं। जस्ट सी हियर व्हाट इज प्रिंटिंग। तो देखो प्रोग्रामिंग में क्या किया, इसीलिए कहते हैं प्रोग्रामिंग इज नॉट समथिंग लाइक दैट यू कैन लर्न समथिंग, प्रैक्टिस ऑलवेज। प्रोग्रामिंग नीड्स प्रैक्टिस। प्रोग्रामिंग को रटा नहीं जा सकता है, प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक है, लर्न भी नहीं बोलते। लर्न का मतलब क्या होता है? याद करना। लर्न का मतलब क्या होता है? याद करना। और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। सो यू गॉट दिस पॉइंट। हमने क्या किया? क्या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा हमने लॉजिक में? केवल ये देखा कौन सी चीज, विच थिंग वी शुड प्लेस वेयर टू गेट अ प्रॉपर लॉजिक। यस और नो? समझे? तो इंटरव्यू में आपको यही तो करना है, इफ का यूज, एल्स का यूज, फॉर ईच का यूज। अच्छा चलिए, अब मुझे एक प्रोग्रामिंग बनानी है। इसी को एक प्रोग्रामिंग और दिखाता हूं आपको, ये सिर्फ देने के लिए कि प्रोग्रामिंग इज नॉट अ टफ थिंग, ओनली यू हैव टू थिंक। आप कैसे सीखोगे? ग्रुप में व्हाट्सएप का फायदा उठाओ। फायदा क्या उठाओ? कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाओ, मैं देता हूं, आप उसमें डालो, फिर देखो अच्छा नहीं हो पा रहा है तो ऐसे करते हैं, नहीं हो पा रहा है, प्रदीप भैया तो बैठे ही हैं, प्रदीप इज ऑलरेडी देयर टू असिस्ट यू, only you have to raise a concern, but before that you have to make sure you have practiced it. अगर आपने प्रैक्टिस किए बिना मेरे पास आ गए तो आप समझ ही नहीं पाओगे।
Got my point? Yes or no? Yes. So tell me one thing. In this loop, when I'm running this program, ये क्या कर रहा है? सारे कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है? I++. हाँ, देखो इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग। समझे आप? देखो गलती करोगे तो समझोगे। मैंने तो नहीं पकड़ा। क्यों पकड़ा आपने? आपने कहा इसलिए कि भाई यहाँ 0 है, यू आर मेकिंग अ नेगेटिव, माइनस माइनस। तो ऐसी प्रोग्रामिंग आएगी, यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन दैट एंड प्रदीप कांट डू एनीथिंग फॉर यू। प्रदीप आपके लिए क्या कर सकता है? वो एक काम कर सकता है, जब आप फंसो तो प्रदीप आपके लिए अवेलेबल रहे। ये प्रदीप की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रदीप गोइंग टू कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक द प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करने में कमजोरी की, मैंने बताने में की, अपना अपना पार्ट कम किया, ट्रस्ट मी, इन दिस वर्ल्ड नोबडी कैन टीच यू द प्रोग्रामिंग। सही कह रहा हूं कि नहीं? Yes. Yes, Pradeep. तो मैं अपना पार्ट करूंगा। आई कैन यू मेक श्योर ऑन यू दैट। और ये सेशन रिकॉर्डेड है, आप किसी को भी दिखा देना अपने घर में भी कि प्रदीप ने देखो बोला था, बाद में चीटिंग कर रहा है। लेकिन आपका पार्ट भी होना चाहिए, ठीक है? चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन। आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, इट इज प्रिंटिंग ऑल द वैल्यूज। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे प्रिंट नहीं करनी सारी वैल्यू, मुझे ये प्रिंट करना है, जस्ट सी व्हाट आई एम सेइंग। मुझे प्रिंट करना है कि अगर मैं आपको बताऊं, एक कैरेक्टर मैं आपको दे रहा हूं, CHAR कैरेक्टर। इस कैरेक्टर वेरिएबल का नाम, मेकिंग द वेरिएबल नेम वेरी वेरी मीनिंगफुल, सर्च कैरेक्टर। एंड सपोज सर्च कैरेक्टर इज T। सर्च कैरेक्टर इज T। तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है कि अगर ये सर्च कैरेक्टर मेरे स्ट्रिंग में है तो प्रिंट कर दो ट्रू, और नहीं तो प्रिंट कर दो फॉल्स। तो मुझे बताएगा हाउ वी कैन अचीव इट। So for the T index value, we need to initialize as a 0 and accordingly need to search that character. So We can we can write? apply if condition Very good. inside a for loop. Yes. तो देखो क्या कर रहा है ये प्रोग्रामिंग, क्या कर रहा है, एक एक करके अगर ध्यान से दो, ट्राई टू ब्रेक योर प्रोग्रामिंग। दिस इज एक्चुअली प्रिंटिंग ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ योर एरे। यस और नो? Yeah. तो जब भी आपको इसमें कैरेक्टर मिल रहा है तो आपको प्रिंट करने से पहले चेक ये करना है, क्या ये कैरेक्टर आपके इस कैरेक्टर से मैच करता है कि नहीं। यस और नो? आपको यही तो ढूंढना है कि इसमें है कि नहीं है। तो एक एक करके जो कैरेक्टर मिल रहा है उसे लिखो, इफ माई कैरेक्टर इक्वल टू द सर्च कैरेक्टर। Search. मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. अगर मेरा कैरेक्टर सर्च कैरेक्टर के बराबर है तो यही तो करना था। इफ कंडीशन में क्या प्रिंट कर दो? True. ट्रू या पास, जो भी आपको चाहिए। तो देखो प्रोग्रामिंग ऐसे ही तो बनती है। आपकी प्रोग्रामिंग लिखा है, चलो मैं ट्रू लिखता हूँ, TRU। और अगर ऐसा नहीं होता है, False. अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या लिखना है? फॉल्स। False. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, Yes. यस और नो? Yes, sir. तो ये आपकी प्रोग्रामिंग होती है। अब ये प्रोग्रामिंग में ध्यान से रखना एक चीज, ध्यान से क्या रखना है कि अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को चलाऊं तो ये प्रोग्राम गलत चलेगा। ध्यान से दिखाऊं, लेट मी रन। क्या प्रिंट कर रहा है? अच्छा, ये कैरेक्टर को प्रिंट करना जरा बंद कर दो, अदरवाइज इट विल मेक अ कंफ्यूजन। व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग? True, false, false. कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि that loop is searching for all the characters and we are getting result for all. Like एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इसका मतलब क्या है कि देखो उसका, जब आपका कैरेक्टर पहला T आया तो सेटिस्फाई हो गया, यहाँ गया ट्रू प्रिंट कर दिया। True. Yes, sir. लेकिन लूप तो आगे अब भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Yes. तो अगले कैरेक्टर पे जब ई पे गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसने ट्रू किया, अगले बार के लिए क्या प्रिंट किया? False. तो एक तो चीज, इसका सोल्यूशन क्या है, देखो कि मुझे यहाँ पे मार के जब आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है और आपको लूप आगे नहीं चलाना है, तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, ब्रेक। ये देखो ऐसी प्रोग्रामिंग सीखते हैं। ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं। सही चल रहा है? Yes. Yes. लेकिन अभी भी प्रोग्राम गलत है। प्रूफ करके दिखाऊं? अगर आप इसको टी की जगह ई सर्च मारते हैं, क्या मारते सर्च, T. तो देखो आउटपुट क्या है। False. 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 True. False to false. क्योंकि पहले वाले के लिए तो उसने फॉल्स हुआ,
अगला बार ट्रू मिल गया तो उसने ब्रेक कर दिया, फिर तीसरे के लिए नहीं चेक किया। सही कह रहा हूँ? अब देखो आप लोग इंटरव्यू में प्रोग्राम डालो, यू विल राइट दिस प्रोग्राम इन द इंटरव्यू एंड ही विल गिव द लॉजिक, ये देखो आई हैव फेल्ड। तो इसका मतलब क्या था, मुझे कुछ ऐसा करना है कि फॉल्स तभी प्रिंट हो जब पूरे उसमें वो मिले ही ना। सही कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. तो एक तरह से सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो उसको, चूंकि मैं लूप में प्रिंटिंग करा रहा हूं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? चूंकि मैं लूप में प्रिंटिंग करा रहा हूं। तो आप देखो इसकी ट्रिक देखो क्या करूंगा मैंने आई हैव टेकन अ बूलियन वेरिएबल। आज मैं आपको प्रोग्रामिंग ही सिखा रहा हूँ। एक बूलियन वेरिएबल लिया। बूलियन का मतलब क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। क्या होता है? तो एक वेरिएबल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, बड़ा मीनिंगफुल नाम रहा है। आई एम टेकिंग अ मीनिंगफुल वेरिएबल इज एग्जिस्ट। इज एग्जिस्ट मैंने लिख लिया फॉल्स। क्या लिख लिया? इज एग्जिस्ट इक्वल टू फॉल्स। मतलब मैंने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? फॉल्स। फॉल्स। अब देखो मैं प्रोग्रामिंग में क्या करूंगा, प्रोग्रामिंग में ये एल्स पार्ट को मैं हटाता हूं, हटा दिया। और यहां पे मैं जो प्रिंट कर रहा था प्रिंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये करूंगा कि अगर लूप में मेरा ये कैरेक्टर मिल जाता है तो मैं इज एग्जिस्ट की वैल्यू को क्या कर दूंगा? फॉल्स। ट्रू। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप मुझे बताओ, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है फॉल्स। अगर लूप में कंडीशन ट्रू हुई, सही हुई, तभी इसकी वैल्यू ट्रू होगी ना, वरना तो अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं। और एक बार ट्रू हो गई तो लूप ब्रेक हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, लूप खत्म होने के बाहर मैं सिंपल ये कंडीशन जो मैंने अंदर लगाई थी वो कंडीशन बाहर लगाऊंगा। क्या देखना, उस वेरिएबल पे नहीं, मैं लगाऊंगा कि अगर मेरा इज एग्जिस्ट क्या है? ट्रू है। मेरी बात समझे? इज एग्जिस्ट क्या है? ट्रू। तो प्रिंट कर दो कि एलिमेंट एग्जिस्ट, यस और नो। यस। एग्जिस्ट या मैंने जो भी बोला था ट्रू, एग्जिस्ट लिख दो, ट्रू फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं है तो एक ही कंडीशन, लास्ट में लूप चलने के बाद वैल्यू दो में से एक ही होगी ना। यस। या तो वो एग्जिस्ट होगी, ट्रू होगी, या फॉल्स होगी। तो मैंने बोला अगर ट्रू है तो लिखो एग्जिस्ट और नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट। सही कह रहा हूं? यस सर। तो आपके सामने मैंने प्रोग्रामिंग की है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग होती। अगर मैं प्रिंटिंग अंदर कराता तो ये प्रिंटिंग सबके लिए चल रही थी, एक के लिए ट्रू चलेगी, एक के लिए फॉल्स, तो दोनों कंडीशन चलेंगी, यस और नो। तो आई हैव नॉट मेक एनी प्रिंटिंग देयर। मैंने सिर्फ एक वेरिएबल ले लिया जो डिसाइड करने के लिए कि जब मेरा लूप खत्म हो तो मुझे पता चले कि एलिमेंट था कि नहीं था। समझ रहे हो? हाँ जी, कुछ तो बोलो, बुराई कर दो, तारीफ कर दो। रिकॉर्डिंग कभी किसी आपके घर में मम्मी पापा ने देख ली तो कहेंगे प्रदीप भी देखो कैसे कैसे बातें करता रहता है ना। और वैसे मैं अपने घर में रिकॉर्डिंग ऐसी देखता हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग अपनी देखता हूँ तो चला लेता हूँ टीवी पे, है ना, देखता हूँ, मैं अपनी एनालाइज करता हूँ कि मैं हाउ आई एम जस्ट टीचिंग, इज देयर एनी फीडबैक आई हैव टू गिव माई सेल्फ टू मेक इट बेटर। तो मैं ऐसे देखता हूँ, मेरे घर में सब पापा बच्चे सब देखते रहते हैं, पता है, सब देखते रहे, कहते हैं अच्छा प्रदीप तुम ये भी बोलते हो बीच में, और इतना बार बार क्यों बोलते हो कि पूछो पूछो पूछो। नहीं पूछते, छोड़ दो, ठीक है। ओके जस्ट लीव इट। चलिए मेरी बात समझे, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरा चैलेंज ये था, अगर मैंने इसको लूप में डाला तो ये तो दोनों के लिए प्रिंट करेगा ना। Yes. तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, मैंने उसको वेरिएबल ही डिसाइड कर लिया कि इस वेरिएबल की वैल्यू मैं लास्ट में डिसाइड करूंगा या तो ये फॉल्स होगी या ट्रू होगी। तो मैंने पहले मान लिया कि इसकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब मैंने मान लिया कि एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और whenever the condition will be true, उसके अंदर मैंने वैल्यू उसकी ट्रू कर दी और ट्रू के बाद ब्रेक कर दिया। मतलब अगर लास्ट में वैल्यू एक बार ट्रू हो गई तो आगे मुझे उसको नहीं चलाना है। तो लास्ट में आप वैल्यू क्या होगी, अगर ये लूप चला इसके अंदर करेक्टर नहीं मिला तो वैल्यू लास्ट में क्या रह जाएगी, फॉल्स। सही कह रहा हूं कि नहीं? Yes. तो चलो पहले चला के दिखाता हूं। अब इस ई की जगह जरा दे दो एफ या जी दे। अब मुझे बताओ, इस लूप में मैंने एक एक्सिस की वैल्यू को माना फॉल्स, इस पूरे लूप में करेक्टर चलेगा लेकिन कभी भी इसमें अंदर जाएगा नहीं। तो एक एक्सिस की वैल्यू क्या थी बाय डिफॉल्ट, फॉल्स। तो फॉल्स ही रह जाएगी। देखो मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो आपको देखना है कि कहां पे प्रिंट करना है। तो अगर आपने यही कोड इसके अंदर कर दिया होता तो प्रॉब्लम होती। तो आपको धीरे धीरे लॉजिक, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मैं भी बचपन से हुआ और मैंने कोडिंग, मैंने जैसे आपको कर रहे हो ना, मैंने खुद एनालाइज किया। दैट्स व्हाई पीपल से दैट, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ,
कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ. रीजन इज दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, दैट एट विच पॉइंट यू पर्सन आर स्टक. तो मैं उस पॉइंट को धीरे धीरे बताता हूँ. एक लूप को, एक प्रोग्रामिंग को बताने के लिए, एक लूप को बनाने के लिए जितना मैं टाइम लेता हूँ, ट्रस्ट मी, लोग 1 महीने में सेलेनियम खत्म कर देते हैं विद फ्रेमवर्क, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट द कोर्स. माई पर्पज इज दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड द बेसिक, यू ऑटोमेटिकली क्रिएट द फ्रेमवर्क. अगर आप खुद समझ गए ना, तो आप, मैं आपको इंग्लिश बता दूंगा, लिटरेचर, पोएट्री तो आप भी कर लोगे. सही कह रहा हूँ? Yes. जावेद अख्तर को किसी ने नहीं बताया कि गाना कैसे लिखते हैं, उसको ये बताया था बचपन में टीचर में कि उर्दू कैसे में क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे उर्दू की ग्रामर होती है, कैसे हिंदी की ग्रामर होती है. वो उसमें स्ट्रांग हो गया. पोएट्री तो उसने खुद लिख ली. गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? Yes. तो यहाँ पे भी अगर आपको प्रोग्रामिंग के बेस क्लियर है, तो आपको कोई बड़ा प्रोग्राम बनाने को बोलेगा, वो तो आप छोटे छोटे पार्ट में कर ही दोगे. ओनली थिंग इज दैट योर बेस शुड बी क्लियर. तो आपको मैंने दिखाया 3 प्रोग्राम मैंने आज आपके इंटरव्यू के कवर किए हैं. प्रिंटिंग द ऑल एलिमेंट्स, प्रिंटिंग द रिवर्स ऑर्डर, फाइंडिंग एंड सर्चिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ प्रिंट. यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट? Yes. ठीक है. तो आज मैं इतना ही रखूंगा. हमको इसमें, आपको मैंने एक ही फंक्शन पे बताया है, लेकिन आपको ऐसे ही प्रोग्रामिंग यू हैव टू लर्न, एंड यू हैव टू लर्न सो मेनी फंक्शन. एक फंक्शन और बता देता हूँ. रीजन इज दैट दैट फंक्शन इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस वन, सो लेट मी डिलीट दिस. ध्यान से देखना. str का जो एक फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट फंक्शन वाज char add. You was giving the index, it was returning the character. Yes or no? Yes. अब इसका एक उल्टा फंक्शन भी इसमें है. उल्टा फंक्शन समझ गए हो? इंडेक्स ऑफ. इंडेक्स ऑफ मतलब आप उसे दोगे कैरेक्टर, और वो क्या देगा? उसकी क्या देगा? Index. इंडेक्स. यू गाइस आर ऑसम. इसीलिए इसका रिटर्न टाइप इंट है. तो यहाँ पे 3 फ्लेवर है. अभी आप कंफ्यूज मत होना. आप इंडेक्स ये वाला यूज करना, क्योंकि आप कैरेक्टर किसी एक कैरेक्टर का भी निकाल सकते हो और एक वर्ड का भी. तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंगल कोट्स में लिखूंगा और डबल कोट्स में वट एवर यू राइट. अगर एक कैरेक्टर भी लिखना है तो आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, डबल. आई एम राइटिंग ई. क्या लिखा मैंने? Each. और ये रिटर्न करेगा इंटीजर. तो इंटीजर में स्टोर कर लो. लेट स्टोर इन इंटीजर वेरिएबल इंट एंड से माय इंडेक्स, है ना. मैं इंडेक्स वेरिएबल इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इंडेक्स नाम से ऑलरेडी होता है. अब इसको प्रिंट करता हूँ. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट? 1. 1. यू गाइस आर ऑसम. इसका मतलब इफ आई एम डूइंग द एफर्ट, यू आर गेटिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सैटरडे संडे के बाद मंडे टू फ्राइडे एफर्ट करना. Trust me, your programming will be good. I'm not saying that you will be expertise on that. मिल गई 1? yes or no? यस. Yes. यस. अगर मैं यहाँ पे t डालता तो देखो क्या मिलेगा? 0. बैड. तो आपको केवल 2 फंक्शन मैंने बताए हैं. साथ में आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एरे. मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आपके कोई ज्यादा सेशन नहीं हुए हैं. ट्राई टू सिट टुगेदर. सिट टुगेदर का मतलब इस बैच में, पिछला बैच भी जो चल रहा है उसमें भी आपका बहुत ज्यादा सेशन नहीं हुए. जितनी जावा पढ़ी है शुरू से अभी तक, मंडे टू फ्राइडे खत्म कर दो.